अभी मैं आया हूँ अपने एक दोस्त के फार्म पे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, मैं बाहर जा नहीं पा रहा हूँ। तो अभी मैं गया था वहाँ पे, मैंने सोचा मैं आज हॉर्स राइडिंग करूँगा, बट हॉर्स राइडिंग हम कर नहीं पाए बिकॉज़ ऑफ रेन। तो फिर हमने फीडिंग की। जो इनके लैम्प थे यहाँ पे 6 से 7 लैम्प है इनके पास, उनकी फीडिंग की। चिकन्स के पास गए, उनको भी फीड किया। एंड डॉग्स जो है इनके कम से कम 7 to 8 डॉग्स है, वो अंदर है। उनको तो मैं बहुत डरता हूँ डॉग से, तो वो उनको अंदर रखा। अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि अगर बारिश रुक जाएगी तो मैं हॉर्स राइडिंग करूँगा, वो भी मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा। बट अभी जो नज़ारा है यहाँ पे, जो मज़ा है यहाँ पे कि शहर की ज़िंदगी को छोड़ के यहाँ गाँव में आके यहाँ पे रह के इतना जो मज़ा है। यहाँ पे आसपास कोई भी घर नहीं है, अराउंड 10 किलोमीटर तक कोई भी घर नहीं है, ओनली एक ही घर है यहाँ पे। 10 किलोमीटर तक कोई घर ही नहीं है, सोचो। और ये लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे यार, जब विंटर्स में इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है यहाँ पे, ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। और जिसके मैं घर आया हूँ, मेरे दोस्त के घर पे जो आया हूँ, ये यहाँ पे माँ और बेटा ही रहते हैं और कोई भी नहीं है, सोचो। तो अभी मैं दिखाता हूँ, अगर थोड़ी सी बारिश रुक गई उसके बाद हम फिर बाहर जाएंगे तो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा यहाँ पे हम क्या करेंगे। सामने एक छोटी सी लेक भी है, वो भी दिखाऊंगा। Come on. Oh yeah. Oh my They will God! suck on Oh your my God! Oh my God! अरे वीडियो बनाओ भाई। Oh my God! Come on, babies. Come on, babies, let's go. Special ed. Let's go inside. Come on, come on. भाई, come on, my baby, come on. बिल्ली। ये मैं आया हूँ अपने एक दोस्त के फार्म पे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फार्म है यहाँ पे। ये जो बैक साइड में आपको दिख रहा है, वहाँ पे हॉर्सेस है, वहाँ पे घोड़े हैं। और यहाँ पे जो है ये एरिया डॉग्स के लिए है। यहाँ पे इनके 7 to 8 डॉग्स है, बड़े। तो अभी उनको अंदर रखा है कमरे में, क्योंकि मुझे तो डर लगता है भाई डॉग से, इसलिए मैंने उनको बोला है कि उनको बाहर नहीं लेके जाना है। तो अभी देखो आप यहाँ पे कैसा एरिया है ये। सिटी से 30 से 40 किलोमीटर दूर है ये जगह। बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही शांति है यहाँ पे। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिसके कारण मज़ा नहीं आ रहा है। देखो ट्रैक्टर भी है यहाँ पे, तो अभी हम ट्रैक्टर राइड भी करेंगे बाद में थोड़ी देर। What happened? Well, there's no way you can feed 6 lambs at once. Oh, wow. So we keep See? out 2. We keep out 2. Yup. Where? Inside the car? Fat belly. Come on, baby. Why can't she suck? Mary, why are you not sucking? What You happened? get out of here, Ed. See, Mary, here. the cat. Here. Put it in. Put it in your mouth. Okay, Oh. that's it. The cat wants out. Come on. Come on. Come on, Blackie. You get in here. Yep. That's Is it? it. There's my baby. These two? Okay. Yeah, you these two two? are next. Yes, Okay. these two are next. You. They're chicks? Yeah. How many chicks? I don't know. So. Wow. Wow. Oh wow. See, when I come out, it starts raining. Chickens! Oh wow, it's a big cannon. These are the ones she's hatched before. Oh, okay. These are the small hats? No, these are the medium. Medium size. Yeah. You know, all I do now? You already know? Yeah. Very Wow, cool. We have lake here. Yeah, over there. Oh, there is white. That's a turkey. Oh, there are 2 dogs there? No, that's Oh, that's a sign. that's a sign. Yeah, that's a Okay. sign. And these all things like Everything here is hers. her. So she drives You see everything. the little chickies? I have 3 chicks that I have to feed Yeah, we in can water. see first. We can see first. Yeah, big chicks are in there.
So these all she drive. What's there? The big house there. That's the barn for There? the horses. Oh, Yeah, like this that one? no, that's a Quonset. It holds equipment. She rents that out to a couple of farmers. And this stand? They store their stuff in there. How was that? This? This she's building something. I don't know what she's This building. Maybe something to hold the hay. And this one? I don't know. You gotta ask her. Oh, okay. Annie! Wow. Polo! It's a very big house. My God. हाँ भाई बस बस आ रहे ओके ओके The dog. he has to pee and he said wherever I am going they are not following you, they are following the small girl, right? Oh, no, they'll come. Polo! Apollo! Come on, babe. When something breaks on her truck that works, she goes and digs a part out of one of these and fixes it. All by herself. Like this whole area is for the horses, only 3 horses. All this is for the horse. For 3 horses. Yeah. Well, you have to have 1 acre per horse. Did you not know that? Oh wow. Country roads, take me home. You know that song? Yep. I love that song. Are the horses friendly? Describe friendly. Quite friendly. Keep it close, why? Well, because they'll get out. We don't want that now, do we? If they get out, they will not be back. All right. I'm going to put some oats into the bin for them because... What's this? Way? I think it's a train, Ken. Or she's going to put her bales there Okay. for feed. So she has only 3 horses, right? And she needs a fence to keep them out. Now this is where she puts the oats. Yeah. Seem like what time they go inside? Because in winter it's very difficult to come here. There's a shelter on the other side that they can go into by those trees. Watch Okay. it. Oh. Where are the oats? I forgot to ask. Where This is the damn- place where they stay for the winters too. Yeah. Cold There. winters, like it's very cold. Yeah. here. Well, there's 1, 2, 3 pins for them. Now, is this feed or is this? Oh shit! I Oh, don't she know where the has- feed is. Oh, she has this too. The horses and all. Well, I don't know where she keeps the feed, so I can't give them anything. Unless it's in here. No. इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। ये देखो आप पीछे से यहाँ पे घोड़े रहते हैं, इसमें पीछे हॉर्सेस रहते हैं। कितना एरिया है, 10 से 15 एकड़ में ये पूरा फार्म है इनका। ये देखो ना आप मेरे पीछे, जहाँ तक आपको ये लैंड दिख रही है वहाँ तक ये इनकी ज़मीन है मेरे दोस्त की। तो अभी ये देखिए पीछे कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, पुरानी गाड़ियाँ जो ख़राब हो रखी है सारी, एंड tractors, everything. Wow, this is for snow removal? Yeah. Oh, wow. And See. shit removal. Snow removal के लिए भी रखा हुआ है यहाँ पे. Like everything, they have everything. ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते यहाँ के लोग, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते यहाँ के लोग। यहाँ के लोगों के घर में हर एक चीज़, लाइक यहाँ के किसान जो ज़मींदार लोग हैं यहाँ के, इनके पास हर एक चीज़ होती है। ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहते कि फिर कोई आएगा और इनके लिए काम करेगा या इनके लिए साफ़ सफाई करेगी। दे डू एवरीथिंग बाय ओन, दे डोंट नीड एनीवन टू कम एंड हेल्प देम। इनके पास सब कुछ होता है, एवरीथिंग, राइट? Well, she's a very independent woman. And Yes. She does everything herself. These horses are not coming here, man. No. I just want to, what's the name? Annie? Annie, Apollo, and Sugar. Apollo, 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 Apollo.
Apollo. Yeah, so we are going back now. It's raining. What's this? Like, It's his storage. yeah, okay. Yeah, good night. Good night. All right. You know what? What? Some documentaries I have seen, like